دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شادی بیاہ کے سلسلے میں ایک ویڈیو آیا ہے۔ اس میں ایک کالج کی پرنسپل درخواست کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان شادی کی اہمیت کیا ہے اسے بھی سمجھائیں، اور شادی کے بعد جو حالات گمبھیر ہو جاتے ہیں، گڑبڑ ہو جاتی ہے اور نوبت طلاق یا خلا تک پہنچ جاتی ہے، اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ یہ کئی بار یہ ویڈیو واٹس ایپ پر آ چکا ہے اور آ بھی رہا ہے، آنا چاہیے، کیونکہ قوم کو اس سلسلے میں سوچنے کی ضرورت ہے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ایک مضمون چند سال پہلے قومیت جرنل میں اردو سیکشن میں شائع ہوا تھا۔ وہ مضمون تھا میل وشارم کے یہ امیر النساء صاحبہ کا، جو کہ مسلم پرسنل لا بورڈ میں ممبر بھی تھیں۔ ان کے بارے میں آپ کو جانکاری ہوگی۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ اس سلسلے میں ان کے مضمون کو ریفر کرتے ہوئے میں نے ایک مضمون لکھا تھا جو انگریزی میں ہے، اور میں آپ کی جانکاری کے لیے اسے پڑھ دیتا ہوں۔ یہ مضمون قومیت جرنل میں 2015 سے پہلے شائع ہوا تھا۔ یہ مضمون کیا ہے؟ سنیے گا۔ How to conduct a simple and dignified marriage. I have all praise and respect for یہ امیر النساء صاحبہ of میل وشارم for her excellent article in Urdu titled ہماری شادیوں کا مسئلہ، published in the Qawmiyat Journal, about the importance of conducting simple and austere marriage as per Islamic norms. She has rightly pointed out that although Islam has made nikah marriage easy, we have made it very difficult by our uncivilized and greedy way, and conducting it in total violation of the principles enshrined in the Holy Quran and the Ahadith sayings of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The editorial comments about the evils of posh and extravagant marriage are most apt. I am sorry to say that we Muslims do not conduct marriage in a simple and dignified way. To us, Islam means some routine rituals and nothing else. We discuss even small things with all seriousness and outside the mosque, but in and outside the mosque, but serious and important issues such as importance of Islamic marriage without evil dowry are ignored. The Jamaat leaders and imams do not seem to be interested in reforming the community by bringing in strict rules and regulations for conducting simple marriages and becoming
role models for all. If they come together and act honestly, the entire community will have no option but to follow them, and thus the evils connected with the marriage will be eradicated. Let them ponder over it and act for the sake of the community which is passing through a difficult period having no leaders worth the name. There is another way of approaching it also. The have-nots should know their position well and not try to imitate the rich in conducting past marriages. In the present highly materialistic world, one should be very careful, particularly the poor, because they have no leaders, no ulama, no umara to guide them. They should become bold enough to face the challenges before them by adopting Islamic codes. Conducting a marriage in a simple way is praiseworthy and dignified. The marriage of Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam is a model to us and definitely not the marriage of any prince. The ulama and umara hobnob with each other closely for their own purposes. There are a very few ulama who have the interests of the community at heart. Why should the have-nots worry about them and dig their own grave by doing things which they are not capable of? The general tendency of the people is to waste money in marriages, even by selling properties, if they own, or getting loans from individuals and banks and landing themselves in trouble. Generally speaking, a Muslim family is definitely in no way equal and better to a non-Muslim family in financial standing. Only males are the earning members in most of Muslim families, consisting of at least 4 or 5 persons, whereas in most of the non-Muslim families, both males and females are earning members in most of the cases. One can imagine their predicament in discharging their domestic responsibilities in this situation. Amirun Nisa Sahiba rightly says that dowry is demanded according to the status of the prospective bridegroom. Getting dowry is an insult to the bridegroom, and our youngsters should make it a point to consider so and abhor it. We read a report in newspapers about a Muslim returning the dowry given to him some time ago. There is a glimpse of hope now. There are some youngsters inspired by some movements who do not want to demand or accept any dowry. There are also some instances of some youngsters solemnizing their marriage by giving mahr and not taking any dowry. It is usually seen that the mahr given by the husband is a pittance in comparison with the dowry and other things received by him. How can it be called mahr in the real sense? It violates the Islamic principle. I request you and our ulama to comment on this important issue in a convincing manner. There is also an urgent need for the Muslim community to empower their women by giving them higher education and making them stand on their own legs for the sake of its
progress and prosperity. The Waqf Board can play an important role in reforming the Muslim community in consultation with the mosque Jamaas. It should announce every year for some important reforms. If we all join together, much can be done. Every mosque can constitute a committee to make arrangements for enlightening the people by pamphlets and speeches during Jummah prayers, to consider dowry as an evil and accepting it as a sin. The mosque can also seek the services of different welfare associations for this purpose. The reforms such as the above should come from within the community to safeguard our identity and Muslim personal law. ये मजमून OMS जर्नल में, जैसा कि मैंने कहा, शाया हुआ था। आज एक वीडियो कॉलेज के एक प्रिंसिपल का है, जो कि ग्रुप में आ रहा है, कई बार आ चुका है। उसे देखने के बाद मैंने मुनासिब समझा कि इस आर्टिकल को भी आपके सामने पढ़ दूँ, ताकि आप इस पर सोच सकें, क्योंकि कौम में सबको सोचने की ज़रूरत है। सबको सोचने से ही कौम आगे बढ़ सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह कौम बड़ी भी है। हमारे उलमाए किराम और उमराए किराम की मेहनतों की वजह से कौम में तालीम के सिलसिले में बेदारी पैदा हुई है, और आमबूर में बहुत से इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, हुफ़ाज़, मुफ्तियान किराम हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हमें दीनी तालीम में भी आगे बढ़ने का मौका मिला है, और दूसरे आला तालीम में भी। ये बहुत बड़ी बात है। चंद साल पहले तक ऐसी बात नहीं थी। अब बेदारी पैदा हुई है और तालीम में आगे भी बढ़े हैं। अब देखिए, आमबूर में शाम के वक्त देखते हैं तो हज़ारों लड़के लड़कियां स्कूल, कॉलेज और स्कूलों से घर की तरफ जा रहे होते हैं। अब वालिदैन भी समझ गए हैं कि तालीम की बहुत ज़रूरत है। शादी ब्याह के वक्त भी पूछा जाता है कि लड़की की तालीम कहाँ तक हुई है और लड़के की तालीम कहाँ तक हुई है। जब इस तरह पूछते हैं, जहाँ दिन घरानों में आला तालीम नहीं हुई है, वो शर्माती हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है। यानी मैं ये कहने का मतलब ये है कि तालीम की अहमियत अब हर जगह महसूस की जाती है। तो इंशाअल्लाह हमारी कौम में तालीम की अहमियत और बढ़ेगी, और आला तालीम हासिल करने में लड़के और लड़कियां अब से ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगेंगे। सबसे बढ़कर जब घरों में वालिदैन अपने बच्चों को अच्छी तालीम व तरबियत देने के तैयार हो जाते हैं, तो कोई इसे रोक नहीं सकता। अल्लाह की मदद उनको ज़रूर हासिल हो जाएगी, होती है। यही हम देख रहे हैं। बस किस तरह आसान शादी की जा सकती है मुहज़्ज़ब तरीक़े से, इस पर चंद बातें मैंने मुनासिब समझा कि इस मौके पर आपसे कह दूँ। वही काम मैं अब कर रहा हूँ। आप भी सोचिए
اور اپنے خیالات سے آگاہ کیجیے۔